Dear student, now today we will learn the next important topic, that is leveling survey. So this is surveying 1 and unit number 4. Here we will learn now leveling survey. Now for this topic, as you can see here, what we are doing, we are using the auto level and leveling staff for taking the staff reading. So there are different types of leveling survey. The first survey, that is called as leveling survey. In earlier lecture we have understood various concepts regarding the leveling. Let us have the roundup of all that. So when we talk about the simple leveling, so in the simple leveling, suppose for any given ground, we will set the instrument, that is auto level or dumpy level, at the station, and by making the temporary adjustment of the dumpy level or auto level, we make the line of collimation exactly horizontal. Now for the simple leveling, there are two objectives are there. So first objective is to find out the level difference between 2 points which are near, and another is to calculate the RL of points. So in all the leveling survey, these are the two objectives we are following. So for finding the leveling difference and find the RL of the points, we are conducting the leveling survey. Now in this respect, suppose we consider that we place the leveling staff at this location and another leveling staff at this location. So this is leveling station or staff station A and this is staff station B, and the instrument is placed at this. Now because the line of collimation is given here, we can consider that a first reading, when we start any leveling survey, we take the first reading on a point of known RL, and that is generally called as benchmark or temporary benchmark or permanent benchmark or whatever it may be. So this point we are considering as a benchmark, and the RL of benchmark is generally known, and that known value we can take for the RL of the benchmark. And if the RL is not known, then we can consider that RL of benchmark, that we can assume as 100 meter. So now here this is the point benchmark and the RL of the benchmark we have taken, and while starting any leveling survey, we will take the first reading on the benchmark only. So the reading taken on the benchmark and very first reading taken while starting the leveling survey, and that observation we will take on the leveling staff, and that reading is termed as backside. So backside is the very first reading in any leveling survey that we are taking, and that is particularly generally taken on the benchmark. So here that reading will call as the benchmark, and then now we will continue the leveling survey and placing the leveling staff at various locations. So suppose we will place again the leveling staff at another location, line of continuous goes on ahead. So here with this setup of the instrument, this is the actually our last leveling reading. So this is the last reading on the leveling staff, and that is generally called as foreside reading. So backside is the first observation taken on the leveling staff, and foreside is the last observation, and all other points if you take at the intermediate location, so all they are called as this staff reading, that is called as intermediate site reading. So in any leveling survey, we take the backside observation, foreside observation, and then intermediate site observation, and with this help we can calculate the RL of the different points. Now in this case, suppose the RL of the point A is known, that is benchmark, and RL is 100, we have assumed, then this is the line of collimation which is exactly horizontal, that we have made with the help of temporary adjustment. So this line is called as line of collimation or line of sight. So we can calculate the RL of this line of sight also. Now suppose this is the 100 meter RL of this ground point, and this reading is suppose 1.80. Then RL of this line of sight we can calculate as 100 plus 1.80. So we give it 1101.80. So that is the RL of this line of sight. Now from this is the value of RL of line of sight. This we call it as the height of instrument, HI. So height of instrument is not the height of the tripod, but height of instrument is the RL of the line of collimation, which is calculated by RL of the benchmark plus backside. So we will get the height of instrument.
Now if this height of instrument RL is known, then from this RL we can subtract this reading or this reading. So suppose this reading is now 1.70, this is 1.50 and this is 1.60. So these are the different readings. So 101.80 minus 1.70, that we will get the RL of this point. So this is the point. Here you will get 101.10, the meter is the RL of this point. Similarly, 101.80 minus 1.50, so we will get the RL of this point. So you will get 100.30. Similarly, here again 101.80 minus 1.60, and you will get then again 100.20. So all these values, they are the reduced level of these points. And how we are calculated? So this is the height of instrument, and this is back intermediate side or foresight. Intermediate side or foresight reading. So from this we can derive the two important formula for the leveling survey. So here we can say that, so these are the formula where height of instrument can be calculated is equal to RL of benchmark plus back side. Now this we have to calculate. So here we have to remember that height of instrument always changes when you take the RL of the benchmark at different point. Then again we have to take backside on that point. So we will get the height of instrument. Now if once the height of instrument is known, then you can calculate the RL of any point as we have calculated here. So RL of the point, so RL of the line of collimation or RL of the height of instrument minus that intermediate side or foresight reading. So you will get the RL. So RL of the point is equal to height of instrument minus intermediate side or foresight. So these two formula we have to remember for simple leveling, and by this way what we have achieved? So we have assumed the benchmark RL, and with respect to that we have calculated RL of these points. Now RL of this point and RL of this point we can subtract. So RL of B minus RL of A, that will give you the level difference between the point A and B. So that way, by doing the simple leveling, if the points are not much more apart, far apart, then we can calculate the level difference between that. And along with that also we will get the RL of that points also. And that is the purpose of simple leveling. But it is not always possible that our points are near to the instrument station and we can take the staff reading on that. If the distance is more, and then we have to calculate the level difference or RL of the points, so then again we have to conduct the leveling survey in little bit different manner, and that is called as differential leveling. So here you can see that in this figure, suppose this is our ground level, and we have to calculate the level between this point and this point. So they are long distance apart, and this staff placed at this point is not visible from this point. So in this case, we have to carry out the differential leveling. That is another type of leveling. So in the differential leveling, what we will do again? Then again we will set the instrument at the nearby to the first point. We will consider this point as a benchmark, and we will place the staff on this. By making the temporary adjustment, we will make the line of collimation horizontal. And now with this, we can take the staff reading. So first staff reading we will get on the benchmark, and that is suppose 1.80. So that reading we call it as the backside. Now at another different points we can take the staff reading. Now here we can also place the staff. So here we can take the staff reading, and that will again we will get it suppose 1.90. So RL of the benchmark, that we have to assume RL of the benchmark, that we will assume as suppose 100 meter. So this is the first step. Now, but actually we have to take the staff reading on this point, but that is not visible from this location. So what we have to do? This is the instrument station 1. We have to shift the instrument at another location. So we will shift the instrument here again, and that is the second setup of the instrument. So level is placed at this location L2. This is L1, level 1 location, level 2 location. Now from level 2, again we will make the temporary adjustment, and we will make the line of collimation horizontal. So we will get again one observation. So, but what we have to do? We have to take the backside reading on the same point here.
So this is the point where we have taken this reading of 1.90, that is actually the foresight reading, and here again we will take, suppose this is 0.60, so this is actually the backside reading. So this is the one of the point where from earlier location we have taken the foresight, and from the next location instrument station we have taken the backside. So such point they are called as CP, change point, or turning point TP. So change point or the turning point is the point where we take the two leveling staff observation. And what advantage we will get? So here we can calculate the height of instrument of this line of sight. But for this line of sight, we must know this distance. So to calculate this distance, we must have the two observation on this point. So because of this two observation, we can calculate the this much distance, and by this much distance from this height of instrument, we can calculate this height of instrument, and that is actually the purpose of change point. So again we will take the leveling staff here and leveling reading here. Suppose that is 2.10, but now this is again not visible, so we have to shift the instrument as again another location, so that is the instrument station L3, and here again we will make the temporary adjustment and we will adjust the line of collimation, and again we will get one reading. So suppose this is 0.50. So this reading, it is called as again foresight because it is last reading of this setup, and this is the first reading of this setup, so this is called as backside. And then again at this location we will take, and this reading will be again foresight. Suppose this is 1.80. So in this way we are continuing the survey. So at every particular interval we take the change point. This is also CP2 because there are two observations. So our purpose is to calculate this level difference between the height of instrument of this instrument and height of instrument of this instrument. So to calculate this means to establish the relation between the height of instrument at one instrument station and the height of instrument at another instrument station. We have to calculate this distance, and this is facilitated by taking the two observation at the same station, and these such points they are called as change point. So by taking the number of change point, we can continue our survey for a longer distance or larger distance, and thereby also we are able to calculate the difference between the RL of this station and last station and first station. So that is the advantage of differential leveling, and with this technique we are conducting the leveling survey for a very long distance. So that is the another type. Now from all these observations we have to understand that how the calculations are done and how the RL is calculated for RLs are calculated for different points. So for that we will take some of the example. So here you will learn. Now to facilitate all this calculation, there are two methods are there. So first method, that is called as height of instrument method. Height of instrument method. That is the first method. And another method is rise and fall method. So these two methods we have to utilize. So height of instrument and rise and fall method. With this we will solve some of the problem. So you will get understood that how this is done. Now for this we will take this problem given in the presentation. So from that we can calculate the RL of the different point and whatever is the ask. Now suppose we have conducted one of the survey. So in the problem it is given that following readings were taken with a level on sloping ground at 20 meter interval. So here a ground है और उस पे sloping ground है. It is given that sloping ground and the points are taken at 20 meter interval. 20-20 मीटर पे हमने वो sloping ground पे points ले लिए. Now the RL of the benchmark is given 560.50. Now with this it is asked that calculate the RL of the point by height of instrument method and also find out the gradient of the line joining the first and the last point. So in this problem there are two things are asked. One is RL of points that now we have to calculate, and another is gradient. So that is the problem here. अब यहाँ पे हमको स्लोपिंग ग्राउंड दिया है और इस पे हमने ऐसे 20-20 मीटर पे पॉइंट ले लिए और इस पे हमने रीडिंग लिए. So all these readings we have to now enter into the page of field book, and from that we have to calculate the RL of all these points,
एंड फ्रॉम दिस पहला और आखिरी का पॉइंट का आरएल यदि मिल गया हमको तो हम उसमें का लेवल डिफरेंस निकाल सकते। सो दिस इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। सो दिस इज द लेवल डिफरेंस। सो level difference and distance between them is also known. So if we know the distance and the difference, then we can calculate the gradient of that line also. So for this purpose, now we will consider this data given. So here the different observations are taken by the leveling staff and the auto level. So readings are now 0.865, then 2.105, then 1.025, then 1.580, then 1.865, then 2.230, then 2.835, then 2.355, then 1.760. So in the serial order, these are the observations taken and that is only given. And now from that, we have to fill the page of the field book and we have to calculate the RL of the different points and gradient of the survey line. So how to solve this problem? And here we have to use the height of instrument method. So first we have to remember, we have to plot the table for this and we have to enter the reading into that. So for that we will draw one of the table, so then you can make the calculation fast. So just we will take some of the few of the lines and then we will enter the reading into this. So we have to prepare the page of the field book here, and now you have to remember what are the different columns we are taking for this purpose, and then we can make all these calculations. So here we will take the first column. Actually that column is serial number or point ID will be there. Then next column is here, always we use that is chainage. So here we have to write down the chainage. Then we have to enter the reading of back side. Then we have to enter the reading of intermediate side. Then we have to enter the reading of fore side. Then from this we have to calculate the height of instrument, and from the height of instrument we can calculate the RL of the different point, and then last column will be for the remark. Now this way we will write down all the required values here, and then we will fill up this observation. So here now we have to remember, so very first observation that is always given now, यहाँ पे हमको दिया है कि ग्राउंड हमारा स्लोपिंग है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा स्टाफ का रीडिंग आगे आगे आगे, जैसा यहाँ पे मैंने लेवल रखा तो रीडिंग मेरा आगे का बढ़ते जाने वाला है. सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सिचुएशन हियर. तो सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो पहला रीडिंग है ये तो हम लोग बैक साइड में लिखेंगे और आखिरी का रीडिंग जो है वो फोर साइड में लिखेंगे. सो दैट ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर. अब हमारा स्लोपिंग ग्राउंड होने से हमारा रीडिंग बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे बढ़ने के बजाय एकदम से कम हो गया यहाँ पे. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है. तो ये जो दो रीडिंग रहेंगे, ये दो रीडिंग रहेंगे हमारे चेंज पॉइंट के. सो दिस वी हैव टू रिमेंबर नाउ. ये दोनों रीडिंग एक ही जगह पे है क्योंकि यहाँ पे एकदम लेवल डिफरेंस अलग आ गया. सो दिस इज अवर चेंज पॉइंट. फिर इसके आगे फिर रीडिंग बढ़ते गया, हमारा रीडिंग बढ़ते गया और यहाँ पे एकदम से कम हो गया. इसका मतलब यहाँ पे हमारा फिर सर्वे एंड हो गया और फिर वहां पे हमने डबल से रीडिंग लिया, तो ये दोनों भी पॉइंट हमारे फिर से चेंज पॉइंट आ जाएंगे. सो दिस इज अवर चेंज पॉइंट 2, दिस इज अवर CP1 और फिर आखिरी का ये फोर साइड है. तो पहले हमको जो भी रीडिंग दिए है, नाउ वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज रीडिंग्स आर गिवन एंड वेयर वी हैव टू एंटर दैट. नाउ फ्रॉम दिस serial number and now this is chainage, then this is back side, intermediate side, fore side, height of instrument, RL and remark. So सबसे पहला तो हमारा सीरियल नंबर 0.1 आएगा, चेनेज इसका 0 मीटर आएगा
और बैक साइड में रीडिंग पहले एंटर करना पड़ेगा। सो 0.865 इज द बैक साइड रीडिंग। अब ये बैक साइड में रीडिंग आने के बाद में ये रीडिंग हमारा फिर से लास्ट रीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज पॉइंट आ गया, तो ये हमको फोर साइड में लिखना पड़ेगा। सो सेकंड रीडिंग दैट वी हैव टू राइट डाउन इन फोर साइड दैट इज 2.105। और चूंकि अब ये हमारा चेंज पॉइंट है, तो चेंज पॉइंट पे हमेशा दो रीडिंग रहते हैं, इसलिए चेंज पॉइंट पे फोर साइड का रीडिंग भी रहेगा और बैक साइड का रीडिंग भी रहेगा। सो 1.025 वो उसी पॉइंट पे आएगा सेकंड पॉइंट पे, एंड दैट विल बी बैक साइड रीडिंग। अब यहां से आगे हमारे कंटिन्यू रीडिंग चल गए, तो ये आखिरी वाला रीडिंग फिर से हमारा फोर साइड में जाने वाला है, तो बीच के सारे इंटरमीडिएट में आएंगे। सो ऑल दीज थ्री रीडिंग्स वी हैव टू एंटर इन द इंटरमीडिएट साइड। सो हियर आई 1.580 that we will write on intermediate side, then 1.865, then 2.230, और ये वाला रीडिंग फोर साइड में जाएगा। सो दैट इज 2.835। सो ये हो गया फिर से चेंज पॉइंट 2, तो यहाँ पे फिर से बैक साइड का रीडिंग आएगा डबल, और वो रहेगा 2.355। सो दिस इज अगेन द बैक साइड रीडिंग। नाउ यहाँ से फिर आगे हमारे कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन फिर से फोर साइड रीडिंग आ गया, सो वी विल क्लोज इट हियर 1.760। ये फोर साइड में जाएगा फिर से, तो हमारे ऑब्जर्वेशन यहीं तक रहेंगे। सो हियर वी हैव टू क्लोज द पेज। अब इसके लिए चेंज हमको दिया है, इसका 20 मीटर आएगा, ये 40 आएगा, ये 60 आएगा, ये 80 आएगा, ये 100 आएगा, और ये 120 मीटर आएगा। सो 3 4 5 6 7 पॉइंट्स नाउ वी हैव टेकन। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जर्वेशन भरते आने चाहिए। पहला रीडिंग बैक साइड में, लास्ट का रीडिंग फोर साइड में। जहाँ पे चेंज पॉइंट है वहां पे दो रीडिंग रहेंगे, बैक साइड और फोर साइड का। तो पहले ये वाला रीडिंग रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे रीडिंग आएगा, फिर ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग, फिर ये वाला आएगा, फिर से यहाँ पे बैक साइड में रीडिंग आएगा। सो लाइक वे वी हैव टू एंटर द रीडिंग। नाउ दिस शुड बी नोन टू एवरी स्टूडेंट, हाउ टू एंटर द ऑब्जर्वेशन इनटू द पेज ऑफ फील्ड बुक। Now here we are learning the method that is by height of instrument method. So earlier also we have seen the formula for this height of instrument. So that now we will understand. So formula for height of instrument is given here. So height of instrument is equal to RL of benchmark minus backside. तो अभी ये यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए बेंचमार्क का RL हमको प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया है, एंड दैट इज benchmark RL of the benchmark is given, that is 560.500। तो हमको RL में पहले से लिख लेना पड़ेगा 560.500, that is called as benchmark। रिमार्क में बेंचमार्क लिखेंगे। नाउ दिस इज अवर चेंज पॉइंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा CP1, और दिस इज अनदर पॉइंट, सो हियर वी विल राइट डाउन CP2। लाइक वे दैट वी हैव टू राइट डाउन इन द रिमार्क कॉलम। सो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो हमको यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगी। सो हियर वी कैन कैलकुलेट 560.500 प्लस 0.865, सो वी विल गेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इट कम्स आउट टू 561.365। तो ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। अब जब तक हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह भी इंस्ट्रूमेंट रखा है तो कंटिन्यू रहेगा, बट जहां पर हमारी बैक साइड आ गई तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी बदलती है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो नाउ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको पता चल गई। इसके बाद में हमने ये रीडिंग लिया, अब ये रीडिंग से हमको यदि यहाँ का RL निकालना है, RL ऑफ दिस पॉइंट, सो RL फॉर्मूला इज गिवन एज RL ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यदि हम लोग स्टाफ का रीडिंग माइनस करते हैं तो हमको RL मिलता है पॉइंट का। सो हियर व्हाट वी विल डू, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी इतनी आ गई, इसमें से 2.105 माइनस करेंगे तो हमको आगे का RL मिलेगा। सो हियर माइनस 2.105, सो हियर यू विल गेट द RL दैट इज 559.260। लेकिन बिकॉज हियर नाउ द अगेन देयर इज अ बैक साइड, मीन दिस इज ए चेंज पॉइंट, तो जहां भी चेंज पॉइंट होता है वहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होती है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होती है तो हमको फिर से यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। नाउ दिस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अगेन RL प्लस बैक साइड, so RL is this much 559.260 plus 1.025 that we will add, so we will get the new height of instrument that is 560.285। अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आगे तक कंबाइन कॉमन रहने वाली यहाँ तक का,
बिकॉज ऑल द रीडिंग्स आर इन इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड. जहां पे बैक साइड आएगी वहीं पे रीडिंग चेंज होने वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का. सो नाउ हियर दिस वैल्यू इज रिमेन सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स. अब आगे के पॉइंट का आरएल निकालना है, तो आरएल ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड. सो दिस इज आवर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 1.580 करेंगे तो हमको आगे का आरएल मिलेगा. सो 560.285 माइनस 1.580 ये हम करते हैं तो हमको वी विल गेट द आरएल. सो दैट इज 558.705. सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट आल्सो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ये माइनस रीडिंग करना पड़ेगा. सो 560.285 minus 1.865. So we will get again next RL and that is 558.420. Similarly ये पॉइंट के लिए भी 560.285 minus 2.230 and ये माइनस करेंगे इंटरमीडिएट साइड. So you will get the RL here. So that is 558.055. Now again here this reading is given four side. तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस करेंगे तो फिर से हमको आरएल मिलेगा. तो हियर अगेन 560.285 माइनस 2.835. सो यू विल अगेन गेट द रीडिंग आरएल ऑफ आरएल दैट इज 557.450. बिकॉज अब यहाँ पे हमारा आरएल निकल गया. सो नाउ दिस आरएल अगेन देयर इज अ बैक साइड. सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंजेस. सो वी हैव टू अगेन कैलकुलेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज आरएल ऑफ द बेंचमार्क plus back side. So here the RL of the now this point is 557.450 plus इसमें 2.355 करेंगे. So we will get the new height of instrument and that comes out to be 559.805. अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आगे तक कायम रहेगी. अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फिर से आगे का रीडिंग माइनस करेंगे तो आगे का आरएल मिलेगा. So now this 559.805 is the height of instrument minus four side that is 1.760. So we will get the next RL and that is 558.045. So with this we are able to calculate the RL of the different points. तो हमें इसमें ये याद रखना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए बैक साइड पे जहां रीडिंग रहेगा वहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदलेगी. नाउ दैट वी हैव टू रिमेंबर. और आगे के पॉइंट्स के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही कायम रहती है. इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से सारे रीडिंग माइनस करना है अपने को. इसमें से ये तो ये आरएल मिलेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आरएल मिलेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आरएल मिलेगा, इसमें से फोर साइड माइनस करेंगे तो ये आरएल मिलेगा. एंड अगेन बिकॉज देयर इज अ बैक साइड तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई. फिर उसमें से आगे का रीडिंग माइनस करेंगे तो आगे के रीडिंग का आरएल मिलेगा. लाइक वे वी कैन कैलकुलेट द आरएल ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स बाय यूजिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड. नाउ हियर इन दिस whatever the observation we have calculated we have to check and that is called as arithmetic check. So in the arithmetic check हमको summation of back side and summation of fore side करना पड़ता है. So here we will calculate the summation of back side. So that is 0.865 plus 1.025 plus 2.355. So we will get the summation of back side as 4.245 and similarly summation of the fore side we will calculate. So 2.105 plus 2.835 plus 1.760. So we will get again this four side and it comes out to be 6.70. Now you calculate the difference of these both. Summation of back side minus summation of fore side. So here we will get the value of difference and it comes out to be summation of back side minus summation of fore side, that is minus 2.455. Now this difference should be same with the last RL minus first RL. So here in this case the last RL is 558.045 minus first RL. So 558.045 minus first RL, that is 560.500. So here we will get the value of that is minus 2.455 and these two values are same. So here we can say that our check is okay and this is called as arithmetic check. Arithmetic check. So in this way, by using the height of instrument method, we can calculate the RL of the different point. We can carry out the arithmetic check, that is summation of back side minus summation of fore side, that should be equal to last RL minus first RL. And that way now these calculations are completed and these RLs are now used
to draw the cross section of the ground or the profile of the ground. So here that height of instrument method we have understood. Now we will proceed for further, and the another problem we will solve, and that problem we will solve by using rise and fall method. So here another problem we will take, that we will solve by using the rise and fall method. Same problem we will take with this rise and fall method. So we have to again plot the observations and then again draw the now one point is remaining in this method. So we have to calculate the gradient of the survey line. Now here the gradient is generally difference divided by distance. So here the RL of the difference we can calculate by last RL minus first RL. So already we have calculated it. So that is 2.455, that is the difference between the first and last point. And the distance between the first and last point is here given in the chainage. So 120 meter. So distance is 120 meter. Difference is 2.445. So we can convert this as 1 divided by some value. So 120 divided by 2.455, that we will do. So we will get here 48.88. So from this we can say that the gradient of the survey line is 1 in 48.88 meter. So that way we can calculate the slope or the gradient of the survey line by using this RL, difference, and the distance. So here both the answers, now we have calculated RL of the different points and the gradient of the survey line. Now suppose we will consider this problem by using the rise and fall method. So little difference only we have to make. So we will again do it by changing the column of rise and fall. So here instead of this height of instrument, there we have to calculate the rise and fall for the points. So again we will draw these lines and then we will enter this and we will calculate the observation. So here so the entering of the observation is same for this, but now we have to make this column here as a rise, one of the column, and one of the column is fall, and then from this rise and fall then we have to calculate the RL. So here same problem we will solve by the rise and fall method. So for this we have to make this column as a rise column. So rise, and this is fall, and this is RL, and this is remark. Now RL of the first point is already given here. So 560.500, that is the RL of this point, and this in the remark this is our benchmark. Here again we know that this is our CP1. Here it is again known that here is CP2. So now we will calculate this again. Now here we have to understand the rise and fall calculation. Rise and fall का इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पहले पॉइंट का ऑब्जर्वेशन और दूसरे पॉइंट का ऑब्जर्वेशन, इसके हिसाब से कौन सा पॉइंट नीचे है या ऊपर है. तो राइज मीन ऊपर है, फॉल मीन नीचे है. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, पहले रीडिंग में से उसके आगे का रीडिंग माइनस करने का, तो आपको पता चलेगा. सो हियर नाउ व्हाट वी विल डू, रिमेंबर हियर दैट फॉर द इन फर्स्ट पॉइंट देयर आर नो एनी राइज एंड फॉल. पहले पॉइंट पे कुछ भी रहेगा नहीं. फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट से चालू होगा वो. तो पहला रीडिंग हमारा ये है और दूसरा रीडिंग उसके बाद का ये है. सो 0.865 माइनस 2.105 ऐसा करेंगे. सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू माइनस 1.24. So because that is the value minus, so it indicates that the another point is below this point. आगे का पॉइंट इससे नीचे है, तो हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि there is a fall. So there is fall means that is 1.24. माइनस लिखेंगे नहीं because it is in the fall column. तो पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट 1.24 नीचे है, so that is the indication of the fall. Now similarly for next point again. अब यहाँ पे चेंज पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यू करना है रीडिंग का, क्योंकि आपका रीडिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ से फिर से नए से शुरू हो गया. सो विद द नेक्स्ट सेटअप चेंज पॉइंट आने की वजह से पहला रीडिंग ये हो जाएगा, दूसरा रीडिंग ये हो जाएगा. सो वी हैव टू 1.025 minus 1.580. So here again observation comes out to minus 0.55. So we will write down in column of fall 0.55. माइनस लिखेंगे नहीं बिकॉज फॉल के कॉलम में लिखेंगे. फिर इसके बाद का रीडिंग ये है. सो अगेन 1.580
minus 1.865. So here again the observation is minus, so we will again enter this into 0.285. then again इसके आगे का रीडिंग ये है, so 1.865 minus 2.230, so again that is minus, so you will write down in fall column 365. अब यहाँ पे चूंकि ग्राउंड हमको ऑलरेडी स्लोपिंग दिया है तो सारे रीडिंग हमारे फॉल में आएंगे, लेकिन रीडिंग का डिफरेंस यदि प्लस आता है तो वी हैव टू राइज के कॉलम में लिखने का, माइनस आता है तो वी हैव टू राइट डाउन इन द फॉल कॉलम, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ अगेन हियर 2.230 minus 2.835, यहाँ से ये रीडिंग माइनस करेंगे, तो अगेन इट इज फॉल, सो 0.605. यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, फिर से नए से इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ से ये माइनस करना पड़ेगा, सो 2.355 minus 1.760. now here the reading is plus, so now the reading is plus, so we have to write down in rise column, so that is 595. so that way we can calculate the rise and fall, यानी प्रीवियस रीडिंग में से नेक्स्ट रीडिंग माइनस करने का, डिफरेंस प्लस में आया तो राइज के कॉलम में लिखने का, माइनस आया तो फॉल के कॉलम में लिखने का. so that way we have completed here all the calculations of rise and fall. now RL calculation is consecutive now here. तो पहला RL जो है यहाँ से ये आगे का पॉइंट 1.24 नीचे है, तो हमारा यहाँ का RL निकाल सकते हैं हम लोग. तो दिस माइनस दिस, यानी फॉल है तो माइनस करना पड़ेगा, राइज है तो प्लस करना पड़ेगा. सो नाउ वी विल राइट डाउन 560.500, दैट इज आवर गिवन RL. इसमें से माइनस फॉल 1.24, so we will get the RL of the next point. now so it comes out to be 559.260. now here it is a consecutive from this RL, आगे का पॉइंट 0.555 से नीचे है, so this minus this, so you will get the next RL. so here RL 559.260 minus 0.555, so आगे का RL मिलेगा, so it comes out to be 558.705. now from this again we have to subtract this, so again minus 0.285, so next RL that is 558.420, again minus 0.365, so again it is 558.055, again minus 0.605, and that is 557.450. अब आगे का राइज दिया है तो इससे ये वाला पॉइंट ऊंचा है ना, इसमें अपने को प्लस करना पड़ेगा, तो 557.4500 प्लस 0.595, so that way we will get here as is 0.558.045. so here we can remember the formula that for rise and fall method what we are doing, so previous reading minus next reading, so that we will get rise or fall. यदि डिफरेंस प्लस आया तो राइज में लिखने का, माइनस आया तो फॉल में लिखने का, so we can calculate rise and fall. and now for RL, so RL of previous point, RL of previous point माइनस फॉल करेंगे तो RL of next point मिलेगा. so that formula we have to remember, or otherwise we can make that RL of previous point प्लस राइज करना पड़ेगा, यदि राइज है तो प्लस करना है, तो फिर हमको निकलेगा RL of next point. so this way we can calculate the RL of the different points. now here we can make again the arithmetic check. तो अरिथमेटिक चेक के लिए तो अपने को समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड करना है, उसका डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ पे. so same here we have to make the summation of rise and summation of fall also. so here summation of rise comes out to be 595, and we have to calculate the summation of fall. so 1.24 plus 0.555 plus 0.285 plus 0.365 plus 0.605, so that comes out to be 3.05, and दोनों का डिफरेंस निकालेंगे minus 0.595, so it is again
The difference here now, here it is 2.455. So summation of rise minus summation of fall will again give you the value of minus 2.455, and already we have calculated the summation last RL minus first RL. So 558.045 minus 560.5. So again that comes out to be 2.455 minus. So all that values are same. So we can say here hence okay. So arithmetic check is done. Summation of backside minus summation of foresight should be equal to summation of rise minus summation of fall. So that is also correct. And last reading minus first reading of RL. So again that difference is same. So all these values are correct. So we got now here the check, arithmetic check for this. So this section is called as arithmetic check. So on every field book page, after that we have to add these two rows, and here we have to calculate the summation, and here we have to calculate the difference, and we can match that, and we can make the arithmetic check for the calculation or the leveling page. So this way we can solve the problem for calculating the RL of the different point by using rise and fall method. So here again same way we can calculate the gradient as we have calculated earlier. Because the problem is same, the gradient value will remain same, and these formulas we have to remember, and by this way हम लोग ऑटो लेवल से या लेवलिंग स्टाफ से सर्वे करके जो भी ऑब्जर्वेशन लेंगे उसको फील्ड बुक के पेज में एंटर करते आना चाहिए, और एंटर करके फिर हमको उसके वैल्यूज कैलकुलेट करने के हिसाब से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या फिर राइज एंड फॉल मेथड इस्तेमाल करते आनी चाहिए, एंड विद दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस आरएल. अब यदि ये आरएल यदि हमारे निकल गए तो ये आरएल का यूज करके हम लोग हमारा ग्राउंड का क्रॉस सेक्शन कैसा है वो हम लोग निकाल सकते. सो टू अंडरस्टैंड दैट हमको यहाँ पे समझ लो एक डेटम एज्यूम करना पड़ेगा. ये डेटम पे हमारे 20-20 मीटर पे हमने पॉइंट ले लिया है. सो व्हाट एवर द पॉइंट विल बी देयर दैट वी विल मार्क. अब हमको ये जो लाइन है इसके लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट डेटम. अब ये डेटम में सबसे आरएल जो जितने भी दिए है इसमें से सबसे लोएस्ट वाला आरएल कौन सा है, दैट वी हैव टू सर्च, दैट इज 557. तो इसके नीचे का डेटम हम ले सकते. सो वी विल कंसीडर दैट एज 555 मीटर इज द डेटम ऑफ दिस लाइन. तो डेटम हमारा 555 मीटर का हो गया. तो अभी पहले रीडिंग का आरएल है 560.50. तो 555 का डेटम है, तो यहाँ पे अपने को कितना ऑब्जर्वेशन आएगा, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो 560.500 माइनस 555 करेंगे तो 5.5 आ गया. तो हमको यहाँ पे 5.5 की लाइन बनाना है वर्टिकल. फिर 559.26 में से 55 निकालेंगे तो हमको और एक पॉइंट मिलेगा. सो वो लाइन यहाँ पे बनाना है. देन उसके आगे फिर और 558.70 में से 55 करेंगे तो और एक हमको पॉइंट मिलेगा. ऐसा हर पॉइंट पे हमको करते जाना है. तो लाइक वे वी कैन डू दैट. और इसके आगे के फिर 1 2 3 4 5 6 और 7. तो यहीं तक रहेगा हमारा पहला, यानी 20 यानी 120 मीटर की लाइन हो गई हमारी. तो अब ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम लोग तो हमको हमारे ग्राउंड का प्रोफाइल मिलेगा. सो दैट इज द ग्राउंड प्रोफाइल फॉर दिस 120 मीटर. सो बाय कैलकुलेटिंग द आरएल वी आर एबल टू प्लॉट द प्रोफाइल ऑफ द ग्राउंड. अब इसमें आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, कितना ऑब्जर्वेशन है, क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर नाउ सैंपल इज गिवन इन द प्रेजेंटेशन. यू कैन रीड दैट. बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फॉर एनी सिविल इंजीनियर. सो up till for this lecture we will stop here, and in the next lecture we will consider some of the different category of the problem, and that we will try to solve by using height of instrument and rise and fall method. So thank you for today's session. Thank you again.